you learn and you understand the subject well, because this is not an easy subject that I can finish it in just 1 hour or 1.5 hours, right? So be patient, listen, and I don't think so I'll be able to finish, but I will be able to finish if I take another session, and that I can take. Okay, so don't worry about it. I won't rush through it. So let us begin. What are health parameters? How to... You have to go back. Okay. Yeah. Yeah. Right. Okay, so what are health parameters? What are we dealing with today? Bit loud. I have to be louder, so I have to, make a lot of effort. So please be patient. What are health parameters? What are parameters basically? Parameters are any variable, any characteristic that you can measure or you can quantify. And what are health parameters basically? Any parameter which is related to health, which indicates the status of your health, is health parameter. For example, when you suspect anemia, can you just diagnose anemia by seeing or examining the patient? No, you need some evidence. What kind of evidence? You will go for some blood test, right? So the blood test will give you some parameters like hemoglobin or RBCs or WBCs or PCV, etc., etc. So from that data, you can analyze, okay, what parameter is less or what parameter is high, and you can, actually say that, yes, it gives an evidence, basically, that blood report gives an evidence. And then, hence, you can say that, yes, this patient has anemia. And then you will, kind of try to find out what kind of anemia is it, because there are many kinds of anemia. Then you will, request for more tests. So what are these blood tests? What are these variables? Nothing but parameters, health parameters, which tell you the status of health status of a person. Okay. In population also, you get health parameters. For example, when I say the incidence of this so-and-so disease is 40% in the population, what does it mean? It shows the health of a population, health status of a population. For example, if I say the infant mortality rate is so-and-so in this population, what does it mean? That infants, they die within so-and-so period, and they are so many infants, they die in so-and-so period within 1 month or 2 months or whatever. So this also shows the health status of a population, that the infants are not getting good nutrition and therefore they're dying, right? Probably the mother. And therefore what we can do is we can analyze, we can deduce, and therefore we can make health related decisions. What do you call that? Health related decision making. So that was regarding population, but we are concerned, we are concerned with a person, a patient, a client. So we have to know what are health parameters for that person. Okay, so I've given some examples also, like, MCV, MCH, MCHC. These are all, you will get in the blood report. These are indices, functional indices for the red blood cell function. It tells you the function of that, whatever, or how the organ is working, the function of the organ. So all these health parameters are nothing but all those variables or characteristics that, supports, that gives you supportive evidence that the person has supportive evidence of the health status of a person. Okay, or supportive evidence of the functioning of an organ, and therefore the health status of a person can be determined. Is it clear what are health parameters and why you should learn about health parameters? Ultimately, you all will become therapists, right? You will be dealing with people who might not be completely normal in their health. They might have something which is something undergoing, and as a health practitioner, in the sense as a wellness practitioner, you must know how to read the reports, or at least deduce what
is the status of the person. What is the health status of a person by doing some examinations, or these are very simple ones. What a doctor should do, leave it to the doctor. But you, as a simple, wellness practitioner, you must know how to take pulse, because that will tell you the status of cardiovascular system. You must know how to take blood pressure. This is very common. You have those digital blood pressures at home, at office. You should know how to take it, and that will tell you the health status of the cardiovascular system. Okay, you should know how to take the temperature, or maybe you can read how to read the reports. Not all, but at least the common ones, right? So this is what health parameter is all about, and this is what I'm going to discuss today. Now, what are vital parameters? When you go to a doctor, what happens is the patient will tell you the history, and then the doctor, what will he do? He will elicit some signs, means he will examine you as a whole. And then he will see pulse, he will see temperature, he will see blood pressure. And if he's not able to, deduce what it is, he will ask for some more tests. But first, he will examine the patient. Without examining, he cannot determine he cannot determine exactly what the problem is. So by examining, he will know where to go, which way to go, right? So the first thing what they do is they check vital parameters. And what are these vital parameters? The vital itself means the basic function. Okay, the basic. So what are these? The measurements of body's most basic functions. Pulse, hai, BP, hai, that you can measure anywhere. You don't require a doctor to measure all these things. So therefore, and these are measurable, and these tell you about the health status of a person. Therefore, they are parameters. Okay, and vital because they measure the basic function of the organs. Okay, and they are body temperature, pulse, blood pressure, respiratory rate. Of late, we have added oxygen saturation as well. You've seen those pulse oximetry done at the clinics. Yes, sir. I'll come to it. So these are the most basics, and most basic मतलब क्या है, when a person, जैसे एक person है वो death bed पे है, or maybe he is very critical, तो वो जिंदा भी है कि नहीं, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? पल्स है कि नहीं? पल्स will tell you the person is alive. उसका रेस्पिरेटरी रेट चल रहा है, मतलब ब्रीदिंग चल रहा है कि नहीं, which means he is alive. And last, उसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं हाथ लगा के कि कोल्ड है कि वार्म है. If he is warm, means कुछ तो है, गुंजाइश है that he can be revived. Okay, so that is why it's all basic. Okay, so we'll come to the first parameter, that is temperature. Okay, we are mammals. Mammals means we are warm-blooded. Warm-blooded का क्या होता है? What is the principle behind it? That हमारा जो temperature है, it is unaffected by the environment. And हमारा जो temperature है, it is very closely monitored within a range. Okay, हम कहीं cold area में भी चले जाएं, warm area में भी चले जाएं, our body will always try to maintain that temperature within that range. And what is that range? It is 97 to 99 degree Fahrenheit. Okay, there's a thermoregulatory mechanism that is regulated by hypothalamus in the brain. Okay, these are just basics. ये understanding की बात है. अगर मैंने सिर्फ कह दिया कि हाँ temperature ऐसे लेते हैं वैसे लेते हैं, then you understand why. Now you understand कि temperature क्या है, कैसे. It is closely monitored within a range. Okay, and the average temperature, what is it? It is 98.6. Okay, babies and children have a little higher range. वो temperature जो होता है हमारा, हर एक इंसान का अलग अलग होता है. Within that range, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा. अगर same time पे हम लोग temperature लेते हैं, मेरा ही temperature सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा. मेरा temperature as compared to a baby अलग होगा. Right, so basically ये temperature variations होते हैं, and these are completely normal. So these are called physiological variations. So what are these physiological variations? पहला is diurnal. Diurnal मतलब सुबह शाम अलग अलग होता है. शाम को ज्यादा होगा. Why?
because हम activity कर रहे हैं, body will generate heat. सुबह कम होगा while we are sleeping. Why? Because we are sleeping. The activity of all the organs are relaxed. They are working, but in a relaxed manner. Okay. So सुबह शाम अलग होता है. That is called diurnal variation. Exercise में अलग होगा, because when you exercise, your body will try to generate heat. Therefore, temperature अलग हो जाएगा. It will increase. Age, as I said, बच्चों का अलग होता है. Gender. Now, females में क्या होता है? During menstruation, the second phase of menstruation, जो कि ovulation से शुरू होता है, the ovulation phase will have higher temperature. Okay, and as the menses starts, the temperature decreases. Okay, this is completely normal. Then strong emotions, heavy clothing, all these will increase temperature, and this is completely normal. The temperature will always be within that normal range. Okay. Now, अगर normal है तो abnormal भी होगा, right? Abnormal क्या होगा? या तो temperature ऊपर जाएगा या तो temperature नीचे जाएगा. ऊपर जाएगा तो उसे कहते हैं fever. ठीक है? What is fever exactly? Fever भी एक body का response है. When I say fever, fever एक body का response है जो body के लिए काम करता है. Okay? Whenever there is an illness or there is an attack of bacteria, viruses in the body, we get ill, right? So all these bacteria and viruses, ये कैसे है ना? They work at, they survive best at a certain temperature, and that is 98.6, which is actually the average temperature of a person. Okay, so body क्या करती है? It will set its temperature to a higher level to counter the temperature at which the bacteria, the microorganisms can survive. So by raising the temperature, the body is actually fighting against those bacteria and viruses so that they can be neutralized, they can be killed, and the body again become illness free. And then again, the body temperature will come down. Okay, so this is temporary. And this is completely normal because body is trying to defend itself. Okay, this is called as fever. Fever is not same as hyperthermia. Hyperthermia is again increase in temperature, but it is not same as hyperthermia. Hyperthermia में क्या होता है? Body is unable to take that temperature which is outside. Unable to what do you call that? Tolerate. Okay, if the person, for example, people who work in mines, people who work in hot furnaces, what happens to them? They are exposed to such high temperatures that they sweat a lot. Sweating, say, what is sweating basically? This is a process by which the body tries to release the heat. Okay, so, and absorb bhi kar raha hai body because outside it is very hot. So body, what happens is it cannot compensate for what is being released. इतनी body, इतनी heat वो absorb कर रही है, इतनी heat वो absorb कर रही है, अब अंदर से भी generate हो रहा है, वो sweat कर रहा है, but it is not able to compensate for that heat that it is exposed to. So what happens is body temperature, that set temperature जो hypothalamus का होता है, वो crash हो जाता है, and the temperature of the body rises exponentially. 104 degrees Fahrenheit के above जाता है, which is very high for the body. Okay, and that is an emergency. Okay, that is why temperature is a vital parameter. You should know. अभी high है तो low भी होगा. There's something called as hypothermia also. Hypothermia कब होता है? When you go to very cold temperature areas. For example, mountaineers जो होते हैं, they are exposed to, अभी सियाचिन चले जाओ. If you don't take precautions, if you don't take, even वो इतने सारे protection के साथ भी they feel cold. Because it's so cold outside. It's in minus degrees. So what happens is hypothermia can set in. Even then the hypothalamus may not work. And then what happens is hypothermia sets in and you get frostbite. You may get frostbite or you may completely become an ice. It's like that. So this is hypothermia. Hyperthermia कब होता है? 104 के ऊपर होता है. Fever तो आपका 99 के ऊपर जाएगा, तो it is called as fever only, but it is temporary. Hypothermia is when temperature goes below 95 degrees Fahrenheit. Okay, clear? Now these are some of the devices that are available these days.
There's digital thermometer, alcohol thermometer, mercury thermometer. Okay, and recently we have these contactless infrared thermometer as well. You must have seen on those malls, right? So these are some devices that we take temperature from. Okay, and कहाँ रखते हैं, कहाँ से लेते हैं? Most commonly, clinically, it is armpit. Okay, however, armpit का जो temperature होता है, it is lower than what we take orally. Orally क्या करते हैं? टंग के नीचे thermometer रखते हैं. अभी orally जो हम टेम्परेचर लेते हैं that is still lower than what we take rectally. बच्चों में क्या होता है ना, we don't take axillary or orally, we take rectal. छोटे बच्चों में we take rectal temperature because that gives you the core temperature. What is core temperature? Core temperature जो होता है brain and viscera का जो temperature होता है that is slightly higher than what we have outside of the skin. Okay, so that shows core temperature, that is rectal temperature. What we take on the armpit is the skin temperature, right? That is 2 degrees less than the rectal, 1 degree less than the oral. Okay, so always remember that skin temperature is lower than the oral temperature is lower than the rectal. So most accurate and most accurate temperature is given by the rectal reading. Okay. Second parameter is pulse. What is pulse exactly? When the heart contracts, the blood is pushed into the arteries. Arteries क्या करती है to compensate that extra blood? It bulges. Okay, that bulge is passed down the arterial system as a pulse wave. Okay, pulse की तरह ही. If you see this diagram, you can see a little bulge there. So every time the heart contracts, it bulges. Every time the heart contracts, it bulges. And that bulge is passed down the arterial tree. And that bulge is actually felt as pulse when we feel it at some superficial area on the skin. Okay, for example, radial pulse hai, you have brachial pulse, you have carotid pulse. So, jahan wo arteries superficial hote hain, very near to the skin, आप उसको फील कर सकते हो अगेंस्ट अ बोन, अगर उसके नीचे कोई बोनी स्ट्रक्चर है तो. Okay, so you can feel those pulses. What is pulse exactly? It is measure of the heart rate, right? So pulse rate is nothing but equal to heart rate. Every time the heart beats, you get a pulse. Every time the heart beats, you get a pulse. Okay. Therefore, and why it is important, I had already discussed that pulse and blood pressure are basically indicators of status of which system? Cardiovascular system. Okay. Again, I said normal hai to abnormal hoga. What is the normal pulse rate? Normal. Some school says it is 60 to 90 per minute. Some says 60 to 100. Both are okay. Okay. So pulse rate, if it is high, that is called as tachycardia. Pulse rate when it is low, it is called as bradycardia. Okay, अगर 60 से नीचे जाता है, it is brady. अगर 90 या 100 से ऊपर जाता है, it is tachy. Both shows that there is some problem with the heart. Both tachycardia and bradycardia shows that there is some problem with the heart functioning. That is why heart इतना slow beat कर रहा है या फिर इतना fast beat कर रहा है, right? That is not normal. However, tachycardia is always abnormal, or maybe there are some physiological processes also that causes tachycardia. For example, when you exercise करते हो तो क्या होता है, हार्ट बीट एकदम ज्यादा हो जाता है. क्यों ज्यादा हो जाता है? Because you need more oxygen. More oxygen के लिए you need more blood. More blood के लिए हार्ट को क्या करना है? ठक 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 ठक. Like, you know, that is why we get tachycardia. To compensate for that extra oxygen that is required. ठीक है, these are some normal variations. Then फिर जब आपको फीवर आता है तब भी आपका हाई हो जाता है, because you know there's a lot of physiology behind it. Oxygen hypoxia होता है, infection में hypoxia भी होता है. So fever जब आता है तो to compensate for that extra oxygen that is required, plus जो temperature high है उसको भी you know ये circulate करना होता है. You can't have high temperature
like in a body for a very long time, तो उसको भी circulation क्या करता है, it distributes it so that it remains in check, right? So that is why you get increased pulse rate, that is tachycardia in these conditions. There are many more conditions. Then there is arrhythmia also, that is pathological, that is not normal at all. So there are various causes that causes tachycardia. Bradycardia कब होता है? That is also physiologically. कभी कभी कुछ लोग बहुत प्राणायाम करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, रेगुलरली करते हैं. I'm insisting on this regularity. If you do it regularly, athletes में भी when they work out regularly, उनका भी pulse जो होता है, it is little on a lower side. It is not very high. क्यों ऐसा होता है? Because उनका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है करते करते कि एक ही बार अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो इट विल इंजेक्ट इनफ ब्लड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड. दैट इज वाई उनको जरूरत नहीं होती है हार्ट रेट इतना बढ़ाने की. उनका नॉर्मल जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है. ओके, इट मे बी इवन लेस देन 60, मे बी अराउंड 50 to 60 समथिंग. कभी कभी तो 40 तक भी जाता है, बट इट इज कंप्लीटली नॉर्मल फॉर देम. ओके, आप ही कभी काम हो के एकदम बैठे हो, सो रहे हो, तो भी ब्रैडिकार्डिया कभी कभी होता है. ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल. बट कभी कभी पैथोलॉजिकल भी होता है. अगर हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट इज लाइक आई एम नॉट एबल टू वर्क सो मच, आई एम इल, आई एम सिक, तो क्या करेगा बेचारा? नहीं कर पाएगा ना. सो whenever there is heart disorders, you get bradycardia, something like that. You should understand basically why this is happening. Don't just rectify that this is tachycardia and this is bradycardia. Why it is happening, you must understand that. ठीक है, so यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है. सॉरी, हाँ बिल्कुल, एनी रिलैक्सेशन, लेकिन कैसा है ना, वो आपके नॉर्मल में ही रहेगा unless you are actually doing it for a very long time, right? मन तो चलता रहता है ना, so it won't reduce it so much at one in just one shavasana, I mean chaitanyas, right? It has to be regular. So these are some diagrams which I have given to understand what is tachycardia and what is bradycardia. You can see what is bradycardia. The interval between two heartbeats is very long, and tachycardia, the interval between two heartbeats is very short. Okay. What is rhythm? Now pulse में कैसे है ना, there are various characteristics that we see. It's not just counting. Okay, सिर्फ rate हम लोग नहीं लेते हैं. There are various other points that we check. What are the other points? Rhythm. Is it regular or not? Okay, if the interval between two heartbeats is regular, it is, if the heartbeat is happening in regularity, it is called as regular, and that is normal. But अगर वो irregular है तो उसे क्या कहेंगे? Arrhythmia. कभी कभी आता है टक 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 टक, something like that. This is irregular. Tuck, 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 tuck. This is regular. Okay, so we check for the rhythm as well. Okay, then we check for the volume. Volume means the amplitude. Okay, volume किस force से वो हम pulse को feel कर पा रहे हैं. Sometimes it is very weak. जब आप का heart काम नहीं कर रहा होता है अच्छे से. Okay, some cardiac disorders में क्या होता है? You get weak pulse. Bleeding हो जाती है बहुत सारी. Blood is lost. Then what happens is again you get weak pulse because blood is lost. Blood is not enough to have a good heart contraction. So bleeding में हो जाती है. कभी फिर जैसे high bounding pulse कब होता है? जब आप exercise करते हो तो heart is working more. So there will be high bounding pulse. Exercise कर रहे हो. Fever में भी होता है because it has to compensate for the extra oxygen that is required. So this way the body tries to compensate for everything within a normal range. Okay. Then there are other parameters, other characteristics that we see when we check the pulse. That is force. Force मतलब आपको कितना pressure लगाना पड़ रहा है उसको completely obliterate करने में. मतलब आप pulse feel कर रहे हो, आप pressure लगाते हो and वो बंद हो जाता है. So how much pressure are you applying? So उससे भी पता चलता है कि कितना force लगाना पड़ रहा है. ठीक है? So that is an indicator of systolic blood pressure. A rough indicator of systolic blood pressure कि systolic ज्यादा है कि कम है या ठीक ठाक. Okay? Tension क्या होता है? जब आप उसको rub करते हो ना against the bone,
You can feel whether it is hard or soft. अगर हार्डनेस है तो इसका मतलब है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या अथेरोस्क्लेरोसिस है. आर्टरी बहुत हार्ड है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिपोजिशंस हैं जिसके कारण आर्टरी हार्ड हो गई है. ओके, इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. आर्टरी शुड बी pliable, it should be little elastic. Okay, otherwise अगर हार्ड है मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम has gone for a toss. Okay, so this is what we check in tension. Then there is equality, right left equal होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब ब्लॉकेज है. अगर इक्वल नहीं है तो ऊपर नीचे इक्वल होना चाहिए, हाथ में देखो या पैर में देखो इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, जो कि ब्लड वहां तक पास नहीं हो पा रहा है. दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू फील द पल्स प्रॉपर्ली. दैट इज व्हाई देयर इज अनइक्वालिटी. ठीक है, so this is what we check in when we check the pulse. There are some factors which affect the pulse. यहाँ मैंने I have written all these points. For example, age, exercise, emotions, meditation, pranayam, pain, position, anemia, hypoxia. All these are situations where you get different kind of pulse, not the normal pulse. Okay, they affect the pulse. Either वो tachycardia हो जाएगा या bradycardia हो जाएगा. Okay. डैमेज टू दी हार्ट, मेडिकेशन, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, ये आप आगे जाके पढ़ोगे. हाइपर में इंक्रीज पल्स होता है, हाइपो में डिक्रीज पल्स होता है. ओके, लाइफस्टाइल. अब ये जो लाइफस्टाइल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज व्हाट डू? दे आर स्टिमुलेंट्स. दे इंक्रीज द पल्स रेट. और पल्स रेट से इंक्रीज क्या होगा? बीपी भी इंक्रीज होता है. सो बेसिकली इट इज अ रिस्क फैक्टर. इट इज दे ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ओके, अकेला ही इतना काफी होता है कि हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है. दिस इज व्हाट यू मीन बाय इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर. ओके, electrolyte imbalance, hypotension, etc. These are the various causes. How do you examine the pulse? Why pulse is important? Like this is just the conclusion of it. Why pulse examination is important? Because they provide information about status of the heart and the circulation. They provide information about the condition of the arterial wall. Just I said, hard है कि soft है. It gives rough estimate of the systolic, क्योंकि जितना force लगेगा उतना ज्यादा pressure है, इसका मतलब है ना. Then help detect and diagnose arrhythmias. Rhythm जब आप देखते हो तो अगर रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब एरिथमिया है. देन डिटेक्ट बैकफ्लो. ऑल दीज आर बेसिकली समझने के लिए कि उस पल्स एग्जामिनेशन हम लोग क्यों करते हैं. स्टफ अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड इमोशंस होते हैं, एकदम एंग्री होते हैं, फियर, मतलब कभी डर जाते हो. क्या होता है? टेम्परेचर भी राइज होता है और प्लस बस भी आपका राइज होता है, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज. सो इट गिव्स. ब्लड प्रेशर इज अनदर वाइटल पैरामीटर. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? बेसिकली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जब जाता है दिस हार्ट, व्हेन द हार्ट ejects blood after the contraction, when the heart pumps, every pumping will cause some blood to go into the arterial system. ठीक है, with a force. ऐसे ही नहीं चला जाता, घूमते फिरते नहीं चला जाता, with force जाता है. अभी जब ये force से जाएगा तो it will cause some arterial pressure, wall pressure as well. It will cause some प्रेशर देते हुए जाएगा, अपनी वो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस बताते हुए जाता है कि हम आ रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? बेसिकली इट इज द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. ओके, लेकिन आर्टरी भी शानी है, वो भी अपना एकदम पेरिफेरल रेजिस्टेंस देती है. सो दिस इज हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड. सो ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज important because this is dependent not just on the output, not just how much blood is ejected, it is also dependent on the peripheral resistance that is given by the arteries. Okay, so these two are important points, that blood pressure is dependent on the cardiac output. It is also dependent on the peripheral resistance given by the arteries. Understood? Now अभी क्या होता है ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, whenever it contracts, that is the maximum pressure, that is the maximum pressure with which it is ejecting blood, right?
So that maximum pressure is called as systolic blood pressure. Okay, and after this contraction, the heart has to relax also. And when it relaxes, in between two heartbeats, that gives you the minimum blood pressure. That is the minimum blood pressure because उस समय contract नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादा force नहीं लग रहा है, वो अभी normal आ गया, but force उसमें अभी भी है, pressure अभी भी है. So that represents diastolic blood pressure. So what is systolic blood pressure is? Systolic blood pressure is the maximum pressure in an artery when the heart contracts and pumps blood into the arterial system. And what is diastolic? It is the minimum blood pressure in between two heartbeats when the ventricles or the heart is relaxing. Okay, so systolic blood pressure, diastolic blood pressure. When we say blood pressure, it is expressed in millimeters of mercury, that is the unit, and it is also expressed as a ratio of systolic and the diastolic. एक ratio में हम लोग लिखते हैं 120/80 something. So what is 120? The upper number is the systolic blood pressure and the lower number is the diastolic blood pressure. The maximum pressure, the minimum pressure. Okay, and the unit is millimeters of mercury. Okay, this is how we write blood pressure. So pulse and BP together gives idea about cardiovascular system. We should know something about hypotension as well, because normal hai to abnormal hoga. Okay, there is always duality in this life, right? So what is hypertension? Now blood pressure ka jo hai na, we have been given a classification by certain committees which is accepted universally. Abhi uska kya classification hai? There's something called as optimal blood pressure. ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? आइडियल. ऑप्टिमल का मतलब होता है आइडियल. सो आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? लेस देन 120/80. यहाँ इट्स नॉट क्लियर. आई विल शेयर द दिस थिंग विथ यू ऑल, सो डोंट वरी. सो नॉर्मल होता है 120/80. दिस इज ऑप्टिमल. उसके बाद आता है नॉर्मल. नॉर्मल इज विद इन अ रेंज. ओके, नॉर्मल क्या होता है? 120 से लेकर के जैसे लेस देन 130 रफली. इसमें प्रॉपरली दिया है क्लासिफिकेशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. रफली बिलो 130/85, एनीथिंग बिलो 130/85 इज नॉर्मल. ओके, देन व्हाट इज हाई नॉर्मल? नॉर्मल है तो हाई नॉर्मल भी है. हाई नॉर्मल मतलब वहां तक पहुंच गया है, नाउ एक अलार्म बजना चाहिए. सो दैट इज हाई नॉर्मल. हाई नॉर्मल क्या है? एनीथिंग बिलो 140/90. ओके, एनीथिंग बिलो 140/90 विद इन दैट रेंज, नॉर्मल एंड हाई नॉर्मल के इज हाई नॉर्मल. 130/85 से लेकर के 140/90 इज हाई नॉर्मल. मतलब अब उसको लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है. इतना हाई नॉर्मल अगर रहेगा तो हो सकता है वो क्रॉस भी कर जाए वो बाउंड्री, हाइपरटेंशन भी हो जाए. ओके, अभी क्या होगा? सपोज वो क्रॉस कर जाता है वो बाउंड्री 140/90, तो क्या होगा? हाइपरटेंशन सेट्स इन एंड यू आर क्लासिफाइड एज अ हाइपरटेंसिव. ओके, अभी हाइपरटेंशन में भी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. ओके, तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा वो ग्रेड 1 होगा, उससे ज्यादा होगा ग्रेड 2 होगा, उससे ज्यादा होगा ग्रेड 3 हो जाएगा. ग्रेड 3 मतलब भैया उसको हॉस्पिटल लेके चलो. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स. ग्रेडिंग क्यों होती है? सो दैट वी नो कि वेयर टू टेक द एक्शन, राइट? सो आपके भी क्लिनिक में अगर कोई बंदा है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन हाँ आपको समझना तो चाहिए ना कि हाई नॉर्मल है कि ज्यादा है, तो मुझे इसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए. आप डॉक्टर नहीं बनने का, आपको भेजने का. आपका काम है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद द पेशेंट एंड यू शुड सेंड द पेशेंट टू द डॉक्टर एट करेक्ट टाइम, राइट? इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए. एक और होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन है लेकिन सिर्फ सिस्टोलिक नंबर उसका बढ़ा हुआ है, मोर देन 140. ओके, नीचे का 90 से नीचे ही है, लेकिन सिस्टोलिक इज मोर देन 140. दैट इज आइसोलेटेड मींस अकेला. आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आइसोलेटेड डायस्टोलिक का मतलब यहाँ है इसलिए मैं बता रही हूँ. डायस्टोलिक का मतलब है कि सिर्फ जो नीचे वाला नंबर है, द डायस्टोलिक रीडिंग इज लेस
द सिस्टोलिक इज नॉर्मल, इट इज 140 ओनली, बट जो डायस्टोलिक है वो बढ़ा हुआ है मोर देन 90. Okay, this is what it means by isolated diastolic hypertension and isolated systolic hypertension. ना समझ में आए तो ऐसे कर देना बाबा, so that I can explain it again. Okay, अभी hypertension है तो hypertension भी होगा, अब नॉर्मल है तो नॉर्मल भी होगा, हाई है तो लो भी होगा. So what is hypertension? This is very important point for you all. Some people have got postural hypertension. ओके, हाइपोटेंशन बहुत सारी चीजों में हो जाता है, ब्लीडिंग हो गई तो हाइपोटेंशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया. सो बहुत सारी कॉजेस हैं, हार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट अटैक आ गया, हाइपोटेंशन हो गया, दैट इज ऑल ओके. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. व्हाट इज दैट? कभी कभी आपने सुना होगा या फिर किसी न्यूज में होगा कि वो आपके कोई रिलेटिव ही सही बाथरूम गए हैं और वहां पे उनको या तो हार्ट अटैक आ गया या तो स्ट्रोक आ गया. वो बेड से उठे हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया या स्ट्रोक आ गया. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज बिकॉज ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन. द चेंज इन पोस्चर इज द ट्रिगर फैक्टर फॉर दैट स्ट्रोक और द हार्ट अटैक. ओके, क्या होता है ना, जब आप लेटे हुए हो, सपोज आप रिलैक्स्ड हो, लेटे हुए हो, अचानक से आप सिटिंग पोजीशन पे आते हो या फिर अचानक से आप खड़े हो जाते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप करता है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी. क्या होता है कि आपके बॉडी में, एक नॉर्मल इंसान में आपकी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वो डिटेक्ट करते हैं दैट चेंज इन ब्लड प्रेशर, एंड देयरफॉर द ब्रेन सिग्नल्स द हार्ट टू पंप मोर एंड देन वो रेगुलेट हो जाता है. इट इज नॉर्मल पे आ जाता है ब्लड प्रेशर. दिस इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस. इसलिए हमको पता नहीं चलता, हम उठते हैं, बैठते हैं, हमको पता नहीं चलता कि क्या हुआ, बट एक्चुअली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ. किसी किसी का क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक में से 20 mm लो हो जाता है, इतना ज्यादा लो हो जाता है, एंड डायस्टोलिक से 10 mm और लो हो जाता है, इतना ज्यादा होता है. तो बेसिकली इन लोगों में वो जो रिसेप्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, दे आर डिफेक्टिव. ओके, तो उनका जो पॉस्चर से जो डिफरेंस आता है ब्लड प्रेशर में, इट इज नॉट बीइंग कॉम्पनसेटेड. ओके, दैट इज व्हाई यू गेट पोस्चरल हाइपोटेंशन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट. किसी किसी का, अगर आपके भी क्लिनिक में कोई आता है, आपके भी स्टूडियो में कोई आता है एंड सडनली वो उठा, उसको चक्कर आ गया, उसको फेंटिंग हो गया, इसका मतलब उसका बीपी चेक करो, हो सकता है उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन हो. ओके, दिस इज वेरी कॉमन, होता है, स्पेशली जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनमें होता है मोस्ट. सो चेक इट. आपके घर में भी कोई होंगे, आपके मेंबर्स होंगे, सो ट्राई टू चेक कि उनका सोए में क्या बीपी है, खड़े होते हैं तो क्या बीपी है, क्या वो उस रेंज में आता है क्या कि 20 mm डाउन जा रहा है या 10 mm डाउन जा रहा है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, दैट काइंड. यू शुड बी एबल टू चेक. So this is very important. Now, what are the causes of high and low blood pressure? I have given a list of it. Okay, याद कर लेना, but important point here is most of the causes of high blood pressure are modifiable. Okay, it is not like कि हो गया तो हो गया. Okay, they are modifiable. If you change those lifestyle, if you bring some lifestyle changes, they can come down as well. So what are these modifiable? अभी जैसे old age है, gender है, family history, ये सब तो आप change नहीं कर सकते हो. These are non-modifiable. आपका socio economic status भी change नहीं कर सकते हो. But you can calm yourself by meditation and this thing. However, obesity, high sodium intake, alcohol consumption, smoking, contraceptive pills, lack of exercise, medication, chronic, all these things are modifiable. Chronic kidney disease is not, but most of them are modifiable. That is why hypertension is such an important topic to learn. Okay, आप उसको lifestyle से कर सकते हो. As a yoga therapist or a yoga instructor, you can actually bring their blood pressure down if you are aware of all these things कि क्या modifiable है, क्या नहीं modifiable है. Okay, now dehydration is cause of low blood pressure, severe bleeding, weak and heart, I've already discussed, right? What are the effects of high and low blood pressure? कोई भी blood pressure होता है ना, सबसे important है blood pressure का effect कहाँ कहाँ जाता है. ब्रेन में जाता है, आई में जाता है, हार्ट में जाता है, किडनी में जाता है.
These are the 4 important organs that are affected first by blood pressure changes. Okay, brain, eye, heart, kidney. ओके तो उससे ही रिलेटेड सारे सिम्टम्स होते हैं. फेंटिंग अटैक होता है, डिजीनेस होता है, आई में ब्लाइंडनेस हो सकता है, थोड़ी देर के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आ रहा है सामने, यू नो, कुछ स्टार्स दिखते हैं. ऑल दोस आर बेसिकली कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आई में. ठीक है, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक, अंजाइना जैसा पेन हो रहा है. ठीक है, सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कम्स व्हेन द ब्लड प्रेशर इज डिरेंज्ड. Okay. I think I will skip this blood pressure measurement part to the end. Okay. So these are some devices. You can see clearly. There is mercury sphygmomanometer. आपने देखा होगा वो लंबा सा वो green color का grey color का वो instrument देखा होगा. Then there is aneroid. आजकल क्या हो गया ना, basically mercury use नहीं करते हैं. Mercury has been banned. Okay, it is being phased out from all the countries because वो बहुत टॉक्सिक होता है. उससे डिस्पोज करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है और बहुत टॉक्सिक प्रोड्यूस होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है. therefore we are like concerned about its toxicity. therefore mercury को phase out करके we are developing non mercury instruments. एक है aneroid sphygmomanometer, another is जो हमारा डिजिटल आपका apparatus होता है, घर में होता है, सबके घर में है. there is another आजकल रिस्ट वॉच भी आने लगा है. ओके, so I'll come to this later on if I have time. Okay. Okay, fourth parameter is respiratory rate. Okay, respiratory rate and oxygen saturation आप पूछ रहे थे. Oxygen saturation is indicative of respiratory system, indicative of the function, good functioning of the respiratory system, plus brain as well. Why brain? Brain तो भाई सबका कहना ना बाप है. तो brain में thalamus hypothalamus होता है that controls the temperature. अभी मैंने बताया. There's another part of the brain that is called as medulla which regulates the respiratory system. Okay, so अगर breathing चल रही है तो मतलब brain भी थोड़ा काम कर रहा है, right? So respiratory rate is indicative of functioning of the lungs as well as the brain. Okay, so what is respiratory rate? As the name suggests, number of inhalation and exhalation done in 1 minute. One exhalation, one inhalation and one exhalation is counted as one breath. Okay, so the number of breaths per minute is respiratory rate. Normal is 12 to 18. इतनी बोरिंग हो गया. It's okay, I know it's a little difficult. Respiratory rate. So how do we check for the respiratory rate? What we do is we ask the patient to keep their hand on the chest and then we measure how many times it is rising. Okay, one rise is 1 count. Again, another rise is another count. This way we check. We don't put the hand. We ask the patient only to keep the hand and we ask them to breathe. Okay, normal. What is normal is 12 to 18. That is also called as eupnea. Medical term है. आप remember करो तो ठीक है, नहीं remember करो it's okay. Normal is 12 to 18. It is called as eupnea. Then there is tachypnea. High. जब 18 से ऊपर चला जाता है respiratory rate, it is called as tachypnea. When it becomes low, it is called as bradypnea. Brady is less, tachy is high. Tachycardia, bradycardia. Okay, these are medical terms. Funny, but you will have to remember for your exam. Okay. So, what are the causes? Like, जैसे मैंने बताया, pulse कम हो जाता है, जो बहुत meditation and ये करते हैं, उनका respiratory rate भी कम होता है, क्योंकि वो calm हो जाते हैं, breathing deep हो जाती है. Okay, so when that happens, respiratory rate also goes down a little and it is normal for them unless there is some symptom. We don't treat. We say it is good. Okay. What is a spirometer? Basically, spirometer is one instrument that is related to the lungs and we check how much he can inhale or how much to measure. Basically, parameters are always measurable, right?
So how will you measure कि वो कितना breathing कर रहा है? It is done by spirometer. It is like शंख जब हम बजाते हैं तो what do we do? हम सिर्फ exhale करते हैं, right? It is something like principle same ही है. इसमें भी हम inspire करेंगे ना तो उसके अंदर एक ball होता है. I forgot to put a picture on it, but later on I'll share. उसमें एक ball होता है. जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो बॉल ऊपर नीचे होता रहता है, जब एक्सपायर करते हैं तो बॉल ऊपर जाती है. So this is how it happens. So that is a spirometer, and mostly it is used to monitor patients who have lung problems. Asthma है, obstructive lung disease है, or maybe sleep apnea है. These are some lung related problems. So spirometer हम monitor करने में ज्यादा यूज करते हैं. और मे बी कभी कभी एक्सरसाइज भी करते हैं. कुछ लोग जब माउंटेनियरिंग करने जाते हैं तो वी गिव देम दो स्पायरोमीटर्स की, उसको फूंकते रहो सो दैट योर लंग एक्सपैंड्स. अंदर से जितना फूंकोगे लंग एक्सपैंड होगा एंड उतनी ऑक्सीजन आप ले सकोगे, बिकॉज माउंटेन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर आवर लंग्स. तो प्रिपरेशन के लिए भी हमें स्पायरोमीटर की जरूरत होती है. ओके, एब्डोमिनल गर्थ इज another parameter that we do. Abdominal girth का मतलब क्या होता है, हम एक टेप लेते हैं, हम अपने पूरे एब्डोमेन को उससे कितना चौड़ा है कितना कम है वो नापते हैं. So it is the circumferential measurement of the abdomen at the level of the umbilicus, belly button. Okay, वहां पे हम करते हैं, that is abdominal girth. हम क्यों करते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ओबीज होते हैं, कुछ लोगों का वेस्ट ज्यादा होता है, हिप कम होता है, एप्पल शेप होते हैं, पियर शेप होते हैं. सो कितना ज्यादा है, इंपॉर्टेंटली आपको भी जरूरत पड़ेगी आगे जाके. आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर. इज समथिंग कॉल्ड एज वेस्ट टू हिप रेशियो, व्हिच इज रिप्लेसिंग द बीएमआई व्हाट वी यूज्ड टू कैलकुलेट अर्लियर. ओके, बीएमआई क्या है? आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर होता है इन सेंटीमीटर, राइट? तो उससे क्या होता है, कुछ मेजरमेंट, कुछ रेंज आता है, उसके विद इन है तो नॉर्मल है, उसके आउट है तो ओवरवेट है या ओबेसिटी है, कम है तो अंडरवेट है, ऐसे हम नापते थे. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ओवरऑल फैट के बारे में हम जान पाते हैं, बट वेस्ट टू हिप रेशियो में क्या होता है, इट इज मोस्टली द विसरल फैट दैट वी आर कंसर्न्ड विद, बिकॉज विसरल फैट इज द फैट दैट इज मोस्ट प्रॉब्लमैटिक. ओके, अगर आपका वेस्ट ज्यादा है, वेस्ट का मतलब क्या, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन. ओके, आर ग्लास फिगर कहते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला पार्ट होता है दैट इज द वेस्ट. ओके, एंड हिप इज द मैक्सिमम पार्ट जो आपके बट से लेकर के पूरे सर्कमफरेंस आप लेते हैं. तो वेस्ट टू हिप रेशियो मेल्स में होता है, इट शुड बी लेस देन 0.9 एंड फीमेल्स में शुड बी लेस देन 0.8. Okay, anything more than 0.95 in males, anything more than 0.85 in females is abnormal. मतलब कि एप्पल शेप है, उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है. Okay, because visceral fat is another risk factor for cardiovascular problems. Okay, तो जब आपके इसमें आते हैं तो वेट लॉस वाले प्रोग्राम्स रखते हो ना, तो उसमें आप चेक भी तो करते हो ना भैया, कितना है उस बंदे का वेट, कितना है, हाइट कितना है, बीएमआई क्या है, आजकल तो बहुत सारे होते हैं, फैट लेवल कितना है ना. तो उसमें एक वेस्ट टू हिप रेशियो भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज मेडिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन whether the person is at the risk of having cardiovascular problems or no. Cardiovascular में stroke भी आता है. Clear? So these are the different abdominal different vital parameters that abdominal girth is not vital. Actually vital में सिर्फ वो चार चीजें ही आती हैं. Regarding oxygen saturation, what is it? I'll tell you. Hemoglobin जो होता है ना, we have these blood cells in the blood, RBCs, red blood cells. ठीक है, RBCs के अंदर hemoglobin होती है. There's a component called as hemoglobin. Hemoglobin is actually responsible for carrying oxygen in the blood. ओके, वो लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन लेता है और सर्कुलेट करके टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को देता है ऑक्सीजन. एंड वहां से जब ऑक्सीजन पास कर देता है तो एक्सचेंज में इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिंग्स बैक टू द लंग्स फॉर एक्सचेंज एंड देन अगेन पिक्स अप ऑक्सीजन. बेसिकली ये उनका कुरियर चलता रहता है. दिस इज डन बाय हीमोग्लोबिन. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज बाउंड बाय हीमोग्लोबिन. दे आर नॉट फ्री. Most of the oxygen are bound by hemoglobin.
ओके, एंड दैट इज अ गुड साइन. एंड अगर हीमोग्लोबिन से बाउंड नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड साइन. That is what pulse oximetry, that is oxygen saturation, is measured for. Ki how much oxygen saturation is there. It measures the oxygen percentage mein how much quantity of oxygen is bound to the hemoglobin. अगर सपोज 95 से ऊपर है, which is normal, above 95 is normal. If 95 से above है, that means oxygen saturation is satisfactory. अगर 90 से कम है, 90 to 95 is still like okay, danger zone है, हम लोग फिर भी वो ऑक्सीजन सप्लीमेंट देते हैं. बट उससे अगर कम हो जाता है, दैट मीन्स ही हैज टू बी पुट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन. दैट मीन्स ऑक्सीजन जो बाउंडेड है हीमोग्लोबिन में, उसकी कमी है. क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन में बाउंड नहीं होगा तो वो ले नहीं पाएगा सेल, बिकॉज इट इज ओनली द hemoglobin oxygen bounded to hemoglobin that is taken up by the cells, not the free oxygen. Free oxygen क्या करेगा? Toxicity create करेगा. Okay, those are the toxins होते हैं basically free oxygen. Infection, mostly infection. क्या होता है? See, any infection, any illness, जैसे स्पेशली इन्फ्लेमेशन हुआ, इंटरनल इन्फेक्शन है, कोई वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अगर सपोज निमोनिया हो गया तो वैसे भी आपका अफेक्टेड रहता है, तभी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वैसे भी नहीं रहेगा, राइट, बिकॉज वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा है लंग्स. सो ऑल दीज कंडीशंस दे रिक्वायर पल्स ऑक्सीमेट्री. वैसे भी अगर कोई जाता भी है हॉस्पिटल, नाउ इट हैज बिकम अ नॉर्म टू टेक दैट ऑक्सीजन सैचुरेशन. अंडरस्टूड? इसीलिए जब कोविड हुआ था ना, तो लोग वो पोर्टेबल वाला भी लेकर घूमते थे कि मेरा सही है कि नहीं है, एम आई ओके और नॉट ओके, इज माय सैचुरेशन ओके और नॉट ओके. ओके, थोड़ा पैनिक हो गया था उस समय. एंड अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो क्या होता है? आपके लिप्स ब्लू होने लगते. सिंपल. बच्चों का होता है ना, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लू हो जाता है, उसका लिप्स ब्लू हो जाता है, हमारा भी होता है. That also means that oxygen is required. आप ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमेट्री करोगे तो आपका सैचुरेशन कम आएगा. ओके, नाउ हमने तो अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन ही किया. ओके, हमने अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन ही किया है. इज दैट इनफ टू डायग्नोज any condition? No, we need some blood tests as well. We need some blood parameters as well. Okay, so common blood parameters are, I've given a list. CBC है, blood sugar है, urine analysis है, liver function test है, kidney function test है, thyroid profile. There are a list and a number of profiles that we can do. Okay, but इसे आप याद कर लेना, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. These are just some examples. Okay, you need to know what is complete blood count समझने के लिए. ठीक है, आपको आगे काम आएगा. If you want to become a good therapist, you must know how to read CBC at least. उससे ज्यादा तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, but CBC बहुत बेसिक है. CBC is complete blood count, जो कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप कुछ भी बोलोगे कि मुझे थोड़ी थकान हो रही है, थोड़ा सा वो कभी कभी धक धक करता है, मन नहीं लग रहा है, एनर्जी कम लग रही है, अच्छा चलो CBC कर लेते हैं, देखते हैं कितना हीमोग्लोबिन है, कितना आपका आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कुछ. दिस इज बेसिकली व्हाट डज इट टेल यू? इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. ओके, सीबीसी इज बेसिकली यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब मे बी इट विल नॉट डायग्नोज थिंग्स, बट हम स्क्रीन कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएं. व्हाट एक्स्ट्रा कैन आई डू, व्हाट एक्स्ट्रा टेस्ट कैन आई डू, इट विल गिव यू दैट आइडिया. और समटाइम्स अगर अनीमिया आप सब सस्पेक्ट कर रहे हो तो सीबीसी इज अ मस्ट. ओके, so complete blood count is general blood screening test that provides important information about the kinds and numbers of cells in the blood. What are the cells in the blood? Live cells होते हैं blood में. उसकी components क्या होते हैं blood के? RBCs होता है, WBCs होता है, platelet होता है. These are the live cells. And rest plasma होता है. Okay, so ये क्या CBC क्या करता है? These cells के बारे में information देता है. RBC, WBC and platelets. Okay, so CBC measures multiple parameters. उसके नाम आप कर सकते हो RBC count, WBC count, hemoglobin level, hematocrit. ये सब आपको ना उस रिपोर्ट में दिखता है अगर आप देखोगे तो.
लेट अस जस्ट डिस्कस क्विकली ये सब होते क्या है. RBC count, RBC is also called as erythrocyte. Okay, that is why it is also called as erythrocyte count. RBC count is calculated by calculating number of RBCs per cubic millimeter. ठीक है, मेल्स के 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है. ये सब आपके ना उसमें आता है, सो प्लीज ये सब चीजों को याद रखना. मेल्स का कितना होता है, फीमेल्स का कितना होता है. फीमेल्स का लिटिल लेस, it is little less, that is 3.8 to 4.8. Also, different laboratories have slight variations in these parameters. जो उनका नॉर्मल रेंज होता है ना, स्लाइट डिफरेंस आपको मिलेगा फ्रॉम लैब टू लैब, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मेथड दे आर यूजिंग टू कैलकुलेट दैट आरबीसी. ठीक है, कौन सा वो स्टेन यूज कर रहे हैं, जो भी है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन. ये मैंने किसी आई थिंक सबर्बन का देख के लिखा है, उनके इसमें दिस इज व्हाट दे हैव रिटन एज नॉर्मल रेंज. सो व्हाट इज लो ब्लड लो आरबीसी काउंट कब होता है, जब अनीमिया होता है. अनीमिया इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज. यू मस्ट नो अबाउट अनीमिया थोड़ा बहुत. यू नो क्यों होता है, क्या होता है, उसको उसके जो ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके ब्लड टेस्ट में क्या आता है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन द ब्लड टेस्ट. So these things, little bit of anemia you must know in general. Okay, तो आरबीसी काउंट कब होता है, कम कब होता है इन अनीमिया. ब्लीडिंग हो गया तो आरबीसी निकल जाता है ना, तो ऑब्वियसली कम हो जाता है. किडनी डिजीज में क्या होता है, किडनी सिक्रीट्स अ हार्मोन called as erythropoietin which is responsible for RBC production. Okay, सो अगर किडनी डिजीज है तो भी अनीमिया हो जाता है. जिनको बहुत ज्यादा डायलिसिस होती है देखोगे उनका ना हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आरबीसी बहुत कम होता है. क्यों होता है, बिकॉज वो एरिथ्रोपोइटिन बना नहीं पा रहा है बेचारा, एंड देयरफॉर आरबीसी की प्रोडक्शन से नहीं हो रही है, देयरफॉर आरबीसी आर लो. हाई आरबीसी काउंट को क्या कहते हैं, मेडिकली इट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया. ओके, कब होता है हाई आरबीसी काउंट, कब होता है, जब प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है. कैंसर में हो सकता है, ब्लड कैंसर में, राइट, बोन मैरो बहुत ज्यादा बना रहा है, या फिर किडनी में कोई अगर कैंसर हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज्यादा बन रहा है, हो सकता है. लेकिन एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. सो हाई आरबीसी काउंट में कब होता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होता है, प्लाज्मा निकल जाता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स इज हाई, दैट इज व्हाई आरबीसी काउंट एज सच ज्यादा होता है. बट अनलेस एंड अनटिल देयर इज सिम्पटम्स वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, अभी लंग डिजीजेस में क्या होते हैं, उसमें आरबीसी क्यों ज्यादा होता है, भैया लंग डिजीज है उसमें तो कमी हो जानी चाहिए ना, बंदा है. उसमें क्या होता है ना, व्हेन लंग डिजीज व्हेन सेट्स इन, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट. any condition where the oxygen level falls, the body tries to compensate with delivering more number of RBCs, so that more number of oxygen can be bound to it, so that the organs receive adequate number of oxygen. होता है ना भाई, वॉल्यूम बढ़ा दो तो ज्यादा, बिजनेस में करते हैं ना भाई, नहीं आ रही है कोई प्रॉफिट तो क्या करना, वॉल्यूम बढ़ा दो, ज्यादा बिक्री होगी तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, you know, to compensate for that profit. So this is what body also does. It increases the production of RBCs so that more hemoglobin can be bound to, more oxygen can be bound to the hemoglobin of the RBC, and therefore the required oxygen can be met with. Okay, that is why sorry. Yes. Everything body will try to compensate at its best. यहाँ तो मैं ब्लड काउंट के बारे में बता रही हूँ. Okay, exposure to high altitude also increases RBCs. Why? Because oxygen की कमी होती है, therefore RBCs production increases so that it can carry more oxygen. Okay. White blood cells क्या होता है, they are basically they are fighting, soldiers of the body. They help in immunity. व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइटिश होता है व्हेन यू लुक एट इट. ठीक है, अभी जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 ही अवतार होते हैं. ठीक है, व्हाट आर दे आर मोनोसाइट्स, दे आर टाइप्स ऑफ WBC. बेसिकली दे आर मोनोन्यूक्लियस बेस ऑफ द
eosinophils. अभी ऐसे विष्णु 10 काम थे, अलग अलग काम है, okay, ready for the same cause. So what is monocyte? Big, they transform themselves into big molecule that is called as macrophage. It squeezes outside the vessel and it goes and directly kills the bacteria or the mites. Okay, so macrophage ये काम करता है. So this is what the function of monocyte is. Okay, it helps to break down the bacteria. Basically, it squeezes out of the vessel, transforms itself into a macrophage and then kills the foreign body, whatever it is. Neutrophils जो है ना, they are the first line of defense in any kind of illness. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है? जब आपने देखा होगा बहुत सारे वॉर मूवीज में, वो लोग एक पैटर्न बनाते हैं, सबसे सामने लाइक यू नो सबसे वो कवर किए हुए सारे सोल्जर्स होते हैं, एक लाइन फॉर्मेशन होती है उनकी, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. वो एकदम यू नो वो सब शील्ड्स लेके खड़े होते हैं, राइट, विद दैट स्पीयर्स एंड एवरीथिंग इनसाइड, सो दैट जैसे वो आएंगे हम यहाँ से एकदम उनको अटैक करेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. देन इसके बाद क्या होता है, वो हटते हैं, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कम्स. दिस इज हाउ वॉर हैपेंस, राइट. ये आपने मूवीज में देखा होगा शायद. यहाँ भी वही होता है, बॉडी में भी वैसी होती है. क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज न्यूट्रोफिल्स. That is why whenever you have any infection sets in acutely, acute infections में, okay, neutrophils will increase. Okay, neutrophils will increase exponentially. अगर आप अपने ब्लड रिपोर्ट में देख रहे हो कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, means it is an acute infection. It is not a chronic infection. Chronic कब होता है? जब lymphocytes बढ़ते हैं. न्यूट्रोफिल्स का काम हो गया, वो कहता है मेरा काम हो गया भाई, अब आप संभालो. लिम्फोसाइट को कहता है. नाउ द क्रॉनिसिटी सेट्स इन. ठीक है. सो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स आर हाई, acute infections में neutrophils are high. Okay, then there are basophils and eosinophils. Basophils क्या करता है? Basically they secrete histamine and they are helpful in allergic reactions. जैसे मैंने कहा सबके अलग अलग functions होते हैं. Okay, they act differently. Basophils में क्या होता है? They act differently and they act on basically allergic reactions. They are mainly, their function is to curb the allergy. Okay. Eosinophils क्या है? Eosinophils usually they function during cancers and when the parasites is parasite infestation happens. Parasite infestation मतलब पेट में parasite हो गया या कहीं भी किसी की body में parasites. क्या होता है? Basically they are not same as bacteria or viruses. Parasites are another kind of this thing, microorganism that is completely dependent on the host nutrition. For the nutrition, completely dependent. तब इसलिए कहते हैं ना किसके ये तो बंदा बड़ा पैरासाइट है, कहते हैं ना, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट होता है. एंड व्हेन यू गेट इरिटेटेड यू से ही इज अ पैरासाइट, राइट. आप ही के पैसे से खाएगा, आप ही के घर में रहेगा, आप ही के यू नो दोस काइंड ऑफ पीपल आर पैरासाइट्स. सो दिस इज व्हाट पैरासाइट्स आर. सो उनको मारने के लिए कौन काम करता है? इट्स द eosinophils. It increases when cancer is also there, it increases. Okay. Total WBC count कितना होता है normal? It is 4,000 to 10,000 per cubic millimeter. That is a normal range. Okay. लेकिन ये range भी घटता बढ़ता है depending on what condition the patient has. For example, leukocytosis is when the WBC increases. It's called leukocytosis. It's a medical term. Leukopenia is when it decreases. That is again a medical term. Okay. And बढ़ता घटता कब है? जब इन्फेक्शन होता है तो बढ़ता है. अगर आप WBC का काउंट बढ़ा हुआ देखो तो समझ जाओ कि इन्फेक्शन है. अक्यूट है, क्रॉनिक है, डजंट मैटर, वो तो आपको न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट से पता चलेगा.
बट WBC इंक्रीज है मीन्स आपको इन्फेक्शन है। नाउ अगर WBC कम है उसका मतलब क्या है, मतलब कि इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है, राइट? जिसको बढ़ना चाहिए वो घट गया है। कब होता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स में, HIV हो गया, some viral infections also causes decrease in WBC काउंट। तो जब WBC काउंट डिक्रीज होता है ना, हमारा दिमाग वहीं पे चलता है इसका HIV HbS AG कराओ, सबसे पहले वही काम करते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकता है उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, अदर देयर आर मेनी अदर कंडीशंस एज वेल, बट दिस इज वेरी कॉमन, इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, chemotherapy में भी, chemotherapy and radiotherapy, these are another like things that causes decrease in WBC, because radiotherapy chemotherapy से सारे cells मर जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। This is what happens. Leukopenia, okay, and this is the differential count. Normal कितना होना चाहिए? Lymphocyte should be between 20 to 40%. Monocyte मतलब अगर 100 cells हैं तो उसमें 20 to 40 should be lymphocyte. अगर 100 cells हैं तो उसमें 2 to 10 should be monocyte. 100 cells हैं तो उसमें 40 to 80 should be neutrophils and so on. Okay. बोन मैरो इज जो आपका स्पाइन, जो भी बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बीच में ना देयर आर सम स्पेसेस। आपका कोई भी बोन सॉलिड नहीं होता है, दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन, राइट? दो स्पेसेस आर फिल्ड विद बोन मैरो, एंड वो जो बोन मैरो इट इज वेरी सॉफ्ट टिश्यू काइंड ऑफ थिंग, एंड दोस बोन मैरो उनका काम क्या होता है? RBC बनाना, WBC बनाना, द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज ब्लड सेल्स। ओके, इम्यून सेल्स बनाना उनका काम वही होता है। छुप के रहते हैं लेकिन बहुत काम करते हैं, राइट? दे आर इनसाइड दैट इज। एंड बोन मैरो डिसऑर्डर क्या होता है? अगर कैंसर हो गया कुछ, दैट इज ऑल्सो डिसऑर्डर। उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, बोन सपोज कोई ट्रॉमा होता है, बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, पर्कुलेट्स इनटू द बोन मैरो एज वेल, राइट? सो इन जनरल इट्स कॉल्ड बोन मैरो डिसऑर्डर। बेसिकली इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, उसके बहुत सारे सब कैटेगरीज हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दैट इज डिफरेंट। अम्ब्रेला टर्म में इन जनरल वी कॉल इट बोन मैरो डिसऑर्डर। ओके, RBC देख लिया आपने, WBC देख लिया, देन कम्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? बेसिकली इट इज कंपोनेंट दैट इज कंटेन्ड इन द RBC। ठीक है, एक RBC में 4 हीमोग्लोबिन होते हैं। 4 हीमोग्लोबिन मतलब 4 ऑक्सीजन। Okay, so one RBC will carry 4 oxygen molecules. Okay, so hemoglobin is the basic component that carries oxygen from one place to the other. It is the hemoglobin which is binding to the oxygen. Okay, so hemoglobin कब जरूरत होती है जानने की? नॉर्मली हम स्क्रीनिंग करते हैं CBC की तो उसमें hemoglobin आता है, but hemoglobin is decreased in anemia, राइट? इन अनीमिया। फिर और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर RBC का प्रोडक्शन ही कम हो गया या डिरेंज्ड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होने से क्या होता है? RBC मैच्योर नहीं होती है, वो ना बच्चे बच्चे में ही रह जाती। तो जब मैच्योर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी मैच्योर नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एबल टू टेक ऑक्सीजन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अनीमिया में एक होता है जब हीमोग्लोबिन लेस होता है। एंड हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट कब हम इसे जानना चाहते हैं? अकेले में, not the RBC, not the other parameters, only hemoglobin. When we want to do blood transfusion, or when we want to know how much is it iron deficiency or not deficiency. Because अगर हीमोग्लोबिन लेस है तो आयरन की कमी होगी, इसलिए फिर हम आयरन भी आयरन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लड में कितना आयरन है, क्योंकि अगर आयरन ही नहीं है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन कम होगा। सो दिस इज वेयर हीमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, अनीमिया के डिटेक्शन के लिए। ओके, so what does hemoglobin do? Hemoglobin is the amount of hemoglobin it indicates blood's ability to carry oxygen. Then it is part of the CBC. Normal hemoglobin level in males and females are different. In females थोड़ा कम होता है। Then raised or above normal hemoglobin level means there are too many red cells.
एज आई सेड, बहुत ज्यादा रेड सेल्स होगा तो हीमोग्लोबिन का भी लेवल राइज होगा, राइट, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ आरबीसी, राइट. सो पॉलीसाइथेमिया होगी, इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन. जब प्लाज्मा निकालते तो सेलुलर कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है प्रोपोर्शनली, therefore it will increase. बट मतलब otherwise blood में increase नहीं हुआ, it is because of the plasma that has been removed, it shows that it is increased, right. So ये फंडा हम लोग यूज करते हैं भी, उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, that is why RBCs are high. तो और hemoglobin is high. So these are some of the causes where RBCs are high. ये मैंने लिखा है. Then below normal hemoglobins are can be because of iron deficiency, vitamin deficiency, vitamin B12, B6, B9, all these folate. B9 is folate basically. So all these vitamins also causes deficiency in hemoglobin. Okay. Excessive bleeding, menstruation is very important. So as a therapist, you must know कि menstruations के side effects क्या हैं. अगर बहुत heavy bleeding हो रही है females में, you know, you should ask all these small questions when somebody comes to you for help. तो उसको मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है शायद योगा से अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत कम एनर्जी फील करती हूँ, हो सकता है योगा से अच्छा हो जाएगा. That is why they come to you for yoga, right? तो पूछना चाहिए उनसे आपकी मेंसेस कैसे हैं, इज इट वेरी हैवी, वेरी लो, इरेगुलर है, क्या है. तो यू मस्ट आस्क दैट हिस्ट्री, ओके, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है. हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑल दीज सिम्टम्स विल हैपन ना, लो एनर्जी फील करना, ऑल दीज आर सिम्टम्स, डिजीनेस आना, ऑल दोस. ठीक है. देन देयर आर अदर कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस. Platelet count. Platelet is the third component of the cellular component of the blood, right? The others are RBCs and WBCs. The third is platelet. Platelet count आपने सुना होगा जब डेंगू अगर किसी को हुआ होगा यहाँ पे पास्ट में या किसी फैमिली मेंबर्स को, तो उसमें प्लेटलेट काउंट के लिए हम लोग बहुत पैनिक करते हैं कि प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे जा रहा है. Why? What is the importance of platelet? Platelet basically is important for blood clotting mechanism. What is blood clotting mechanism का मतलब होता है कि जो आपका ब्लड होता है उसमें अगर सपोज कोई इंजरी हो गई कहीं, तो ब्लड वेसल की भी इंजरी होती है यूजुअली, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन, दे आर वेरी लाइक यू नो, कोई भी वेसल की इंजरी ब्लड निकलेगा, राइट. अभी ब्लड निकलेगा तो दैट अ गुड थिंग, क्योंकि उससे आरबीसीज निकल जाएंगे, हीमोग्लोबिन निकल जाएगी, हाइड्रेशन उससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, तो कम सकती है ब्लड में. तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, these platelets they clump together to form clots at the site of the injury. Okay, and these clots they plug that injury so that no more bleeding can. Okay, जब चोट आ जाते हैं, कुछ कट जाता है, क्या करते हैं, दबा दे, उस एरिया को दबा दे so that no more bleeding occurs. and थोड़ी देर में जो प्लेटलेट्स होते हैं अपना काम करते हैं, they form clots in the vessel and they plug those vessels. फिर आप जब हटाते हो तो it is छोड़ भी दो उसको, ना भी करो तो भी थोड़ी देर में वो अपने आप बंद हो जाता है. This is why, this is where the platelets are important. They help in blood clotting mechanism. ठीक है. Normal platelet count is 1.5 to 4 lakh per cubic millimeter, and उनका लाइफ स्पैन जो होता है सिर्फ 5 to 10 days होता है. That is why keep on repeating platelets. अगर like you know अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं प्लेटलेट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर डेंगू हो गया किसी को, तो वी रिपीट इट वेरी फ्रीक्वेंटली, प्लेटलेट्स देखने के लिए कि ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है. एंड व्हाई डू वी पैनिक? प्लेटलेट्स अगर सपोज कम हो भी गया तो व्हाट विल हैपन, द ब्लीडिंग रिस्क विल इंक्रीज because clotting mechanism is deranged. अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे तो ब्लीडिंग रुकेगा कैसे, राइट. तो डेंगू में क्या होता है ना, these platelets themselves form clumps in the blood vessels. वो अपने आप ही clumps form हो रहे हैं, viscosity इतनी बढ़ जाती है कि clumps form करते हैं, and those platelets are not available for clotting when the injury occurs. तो and डेंगू में क्या होता है, सबसे पहले ब्लीडिंग शुरू होती है पेट में, बिकॉज पेट में इतने सारे वेसल्स होते हैं ना, दे कीप ऑन इरोडिंग, यू नो, एसिड से इरोड होते रहते हैं.
सो व्हाट हैपेंस, वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और एक बार ब्लीडिंग शुरू होती है तो हो जाती है, ध्यान, आपको ऐसे चोट लगी यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपको यहाँ चोट लगी यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई इंटरनल। सो बेसिकली अगर प्लेटलेट नहीं रहेगा तो आपकी ब्लीडिंग एक बार शुरू हुई तो बंद ही नहीं होगी, मेंसेस अगर आ गए तो चालू रहेंगे, वो बंद ही नहीं होगा। सो दिस इज वेयर प्लेटलेट इज इंपॉर्टेंट। Okay, so thrombocytopenia and thrombocytosis. When it increases, it is called as thrombocytosis. When it decreases, it is called as thrombocytopenia. Thrombocytosis is also not good. Thrombocytopenia is also not good. Thrombocytosis होगा मतलब increase होगा तो क्या होगा? Increase in viscosity of the blood. वो भी गलत है, उसमें भी clumps हो जाएंगे and then platelets will not be utilized for clotting. उसमें इतने clots हो जाएंगे कि कभी-कभी तो vessel भी block हो जाता है. So increase in platelets is also not good. डिक्रीज होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, राइट? व्हाट इज हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम? अभी ये सारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ब्लड में कितना है, इट काउंट्स दैट वे। सपोज अगर 100 ml एंड दिस इज काउंटेड एज परसेंटेज, लाइक 100 ml में 40 ml सिर्फ सेल्स हैं, ब्लड सेल्स है, दिस इज कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। उसको अगर आप पैक कर दो तो कितना परसेंटेज आएगा? 100 ml, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अगर सपोज आप कोई चीज घोल देते हो पानी में, सपोज चीनी का some molecules that you can actually pack it, उसको खोल देते हो, डाइल्यूट कर देते हो, and then now you want to know कि उसके अंदर कितना वो सब्सटेंस है, तो what you do is आप छानते हो, and छान के जितना निकलता है you calculate that, वो जो छान के निकलता है that is packed cell volume. For example, packed cell volume is 40%, 100 ml में 40 ml is only cellular component. Okay, this is packed cell volume or hematocrit tells us. So normal hematocrit, again it is different for men and women. Okay, it rises in polycythemia. So these are some conditions where the packed cell increases. Packed cell basic component तो उसका RBC ही होता है. So any problems where RBC increases, PCV also increases. Simple सा फंडा है. And PCV कब decrease होगा? जब RBC decrease हो जाएगा. Because RBC is the main component of that छाना हुआ चीज, right? तो अगर RBC कम हो गया तो पीसीवी भी कम हो जाएगा, अनीमिया में हो सकता है, हीमोडाइल्यूशन में हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीस आर सम ऑफ द कंडीशंस वेयर इट डिक्रीजेस. PCV is also important where you give blood transfusion. Okay, this is just a general information. And then other parameters that we check is mean corpuscular volume, that is MCV, there is MCH, MCHC. So these are like they indicate the size of the RBC, the content of the hemoglobin. तो basically हम जान चुके हैं कितना RBC है, कितना प्लेटलेट है, कितना WBC है. अभी हम उससे बस खेल रहे हैं उसके कैलकुलेशंस कि चलो अब हम पता करते हैं कि उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, अब हम पता करते हैं कि उसमें ना RBC का वॉल्यूम कितना है, अब पता करते हैं चलो अब उसमें ये कितना है. So all these things basically tells you different मतलब एनालिसिस, एक एनालिसिस करना होता है, लास्ट में जो मंथन करते हैं ना वो मंथन होता है बेसिकली. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स. Then comes, this is also important for everyone, this is lipid profile. ओके, ये हमारे अपने लिए भी अच्छा है. अब अगर आप लाइक वंस यू गो अबव 40, अबव 50, कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं कराया तो कभी करा लो. Why करा लो? Why lipid profile is important? Because it assesses the risk of the cardiovascular problems that may occur. Okay, क्यों? Because fat हमारे बॉडी में जरूरत होती है. फैट की जरूरत कहाँ होती है? हमारे स्किन में होती है. It provides insulation. फैट हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, बट एक्स्ट्रा फैट नहीं. Okay, जो फैट जरूरत है कहाँ होता है? There are some fats around the organs, viscera में होता है, जो अपने पेट में थोड़ा बहुत होता है to support the organs, right? हमारे skin में होता है for insulation, right? There are fat molecules in the blood also that carries one component to the other, from one place to the other. It acts like a transporter, courier. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं. So there are many
ways that fat is important in our body. But क्या होता है sometimes फैट हम बहुत खाना गड़बड़ खाना खाएंगे तो फैट इज बेसिकली द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. स्पेशली हम लोग मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, चावल, बिरयानी, ऑल दोस थिंग्स, राइट. तो क्या होता है एक्स्ट्रा हम उतना काम भी नहीं करेंगे अगर हमारा एक्सरसाइज कम हो रहा है तो व्हाट हैपेंस, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी बना रही है इट विल स्टोर इट एज फैट. ओके, लिवर में स्टोर करेगा, नॉर्मली लिवर में स्टोर होता है, मगर अगर एक्स्ट्रा हो गया तो हर जगह फिर स्टोर होने लगता है. स्टोरेज में जगह नहीं है. आई हैव टू स्टोर इट इन द स्किन, आई हैव टू स्टोर इट इन दी आपका एब्डोमेन, राइट. दिस इज द लूजेस्ट पार्ट एंड देयरफॉर यहाँ पे तो भाई भर भर के आता है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो अभी और आपने अभी एब्डोमिनल गर्थ लिया, देखा रही तो बहुत ज्यादा है, मींस क्या विसरा फैट बहुत बढ़ गया है. सो दिस इज हाउ फैट इज detrimental to our health, right? तो हर चीज कनेक्टेड है एंड देयरफॉर लिपिड प्रोफाइल आप एब्डोमिनल गर्थ से आप सिर्फ पता करोगे कि वेस्ट टू हिप रेशियो क्या है, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है, ब्लड में कितना है, you need to know. You do a lipid profile and you get to know. Lipid profile again assess the risk. Lipid profile में lipid क्या है, basically they are fat molecules. Fat molecules are of two types, cholesterol and triglycerides. Okay, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने के लिए ये लोग बहुत हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ना उठाने वाला चाहिए. ठीक है, अभी उठाने वाला कौन है, लाइपोप्रोटीन्स. लाइपोप्रोटीन्स क्या करता है, इनको कैरी करता है एंड दे कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर व्हेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, मोस्टली टू द लिवर. ठीक है, लिवर. एंड इसमें क्या होता है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है आपका ट्राइग्लिसराइड, जो कि आपको ब्लड में इफ व्हेन यू लाइक मेजर, वो आपको डायरेक्ट मेजरमेंट देगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लाइपोप्रोटीन, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल्स मोस्टली आर attached to these lipoproteins. तो हमें ये भी पता करना है कि lipoproteins कितने हैं. So depending upon the density, they are also called as low density lipoprotein, high density lipoprotein. They are very important because ये जो carriers हैं इन पर ही डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड will reach the liver or not. अगर किसी का दिमाग सनक गया, वो कहा कि नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊंगा उसको उसके डेस्टिनेशन में, मैं तो यहीं बैठूंगा, और वो ब्लड वेसल में ही बैठ गया, तो क्या होगा, यू विल गेट फैट डिपॉजिट्स इन द ब्लड वेसल्स, राइट. और वो कौन काम करता है, एलडीएल. एलडीएल बड़े ढीठ होते हैं. ओके, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल. And why good cholesterol is HDL? Because वो बराबर से अपना काम करता है. It will take the fat molecules, that is cholesterol and triglycerides. It will carry them properly and reach to the liver. This is what it does, and that is why HDL is called as good cholesterol. And what is bad cholesterol? All the non-HDL cholesterols are bad cholesterols because they may not. And LDL तो एकदम पक्का ही वो बैठ ही जाता है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो यहीं रहना है, मेरे को यहीं घर बनाना है. एंड देन द ब्लड वेसल्स गेट ए, उसमें फैट डिपॉजिट्स होते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस होता है. व्हाट इज स्क्लेरोसिस? द फैट डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल. और जब फैट डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है ना. जिस डोर से वो ब्लड वेसल जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, इट इज हैविंग अ नाइस पैसेज थ्रू द ल्यूमेन. अभी फैट डिपॉजिट्स हो जाएंगे तो उसका ल्यूमेन कॉम्प्रोमाइज करेगा, राइट. उसका जो डायमीटर है दैट विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. कॉम्प्रोमाइज होगा तो क्या होगा, ब्लड को बहुत पुश करके जाना पड़ेगा. व्हाट विल हैपन, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज. और जितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस फैट डिपॉजिट्स, हार्ट को भी उतने प्रेशर से टाप 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 करना पड़ेगा. सो हार्ट इज गेटिंग वर्कड आउट, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है अब. So that is why these LDL are called bad cholesterol, because it has got long chain of bad effects till the heart. Okay, so that is why all these parameters are important to know. How much is the cholesterol, how much is the triglyceride, how much is the LDL, how much is the HDL. Okay, and if you know all these things, you can, how do you reverse it? Firstly, by lifestyle changes. Yoga comes, योगा का फंक्शन जो है यहाँ पे पैरामाउंट है. दैट इज व्हाई यू मस्ट नो उसका लिपिड प्रोफाइल क्या है. किसी कोई इंसान आपके पास आता है हेल्प के लिए, ओके, लिपिड प्रोफाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट.
document that you can see, you can analyze, and you can kind of help them with yoga, meditation, and all those asanas that is required. Okay. Food में भी थोड़ा कमी करनी पड़ती है. Anyway, किसका? नहीं ऐसा कुछ लिमिट नहीं है. बेसिकली वो अपने आप में लिमिट में रहता है, बट इट शुड बी ऑन द हायर साइड. नहीं ऐसा हाई का ऐसा कुछ लिमिट नहीं. लिमिट होता है, बट यूजुअली इट नेवर क्रॉसेस दैट. दैट इज व्हाई वी नेवर से कि यही इसका लिमिट है. अगर उससे हाई जाएगा तो खराब हो जाएगा. नथिंग लाइक दैट. इट शुड ऑलवेज बी हायर देन दिस परसेंटेज. Okay. Now we have learned about vital parameters जो हम check करते हैं body पे. We have learned about some of the blood parameters जो हम measure करते हैं blood से. Now we come to imaging. I hope I'll be able to finish in 10 minutes. Okay. Now these parameters basically they are screening imaging parameters. इससे हमें क्या पता चलता है, हम क्या मेजर कर रहे हैं. इससे आप पूछोगे अगर पैरामीटर है तो समथिंग हैज टू बी मेजर्ड, राइट. हम इसे मेजर क्या कर रहे हैं, हम इसे मेजर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे. इसमें भी बहुत मेजरमेंट्स होते हैं, बट हम क्या जानना चाहते हैं, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. ओके, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली लिंक्ड. व्हाटएवर दे शो इज नथिंग बट the image of not the image but indication of how the organ is working inside the body. We can image them. This is what we want to know, the functioning of the organ. So this is how it is a parameter. Now first is X-ray, also called as radiography, and this is the simplest, cheapest, most available form of imaging. Okay, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो कम से कम X-ray कर लेते. ठीक है. And कैसे है, these are important where जहां पे हमें bony deformities या bony problems जाननी है. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोन्स है, स्टोन्स स्पेशली कैल्शियम से रिलेटेड है, तो वहां पे हमें क्या करते, हमें क्या जानना चाहिए कि उस लाइक उस एक्सरे से हम उसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं. दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. एक्सरे इन दोज थिंग्स, बोनी प्रॉब्लम्स, स्टोन्स, स्पेशली द कैल्शियम स्टोन्स. ओके. फिर और भी बहुत सारी चीजें उससे देखते हैं. अगर एयर है तो इट appears as black, bones appears as white. So this is how we differentiate. X-ray में क्या है, उसकी problems क्या है. X-ray is a radiation. Okay, X-ray you know. X-ray is radiations, and radiations are not good for body. Right? It is not same as infrared or ultraviolet rate. X-rays क्या होते हैं? Their energy is even higher than the infrared and the ultraviolet rays. It has got very small frequency. इसके जो frequencies होते हैं even smaller than the ultraviolet rays and the infrared rays. Therefore, it is highly radiation, radiation is highly radiated. So it is not good for the body. So this is one of the drawbacks of taking an X-ray. Okay, so we have to take some protection. That is why you must have seen कि अगर आप X-ray रूम में जाते हो तो पहली बात तो पूछेंगे कि आप प्रेग्नेंट लेडीज को अंदर नहीं जाने देते हैं. क्यों नहीं जाने देते हैं? बिकॉज फीटल्स को फीटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंडली, दे कवर देयर पेल्विस टू कवर देयर जेनिटल्स एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. To cover that, this is very important. That is why X-rays जब भी हम लेते हैं तो we take that protection. X-ray का हम image बनाते कैसे हैं? X-ray का image कैसे बनता है? We pass the X-ray beams through the body. कुछ beams absorb हो जाती हैं depending upon the depth or it is passing through. And जो beams pass हो गए body से, they strike on a plate. ओके, अभी वो प्लेट लेकर के उससे हम मैनुअली या तो फिल्म बना सकते हैं. आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो आजकल तो सब कुछ डिजिटल ही होता है. ठीक है. सो वी गेट लाइक डिजिटल एक्सरेज आजकल ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ दोस पुराने जमाने में वो फिल्म्स आते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स. आजकल यूजुअली इट हैज बिकम ऑब्सोलीट. नाउ वी टेक डिजिटल एक्सरेज. ओके. एंड इसका काम होता है यूजुअली कभी कभी इंटरवेंशनल करते हैं रेडियोलॉजी. कभी बायोप्सी लेना है तो हम देखते हैं कि कौन कितने अंदर है, डिसाइड एग्जैक्टली कितना नीडल डालना है, कितना हमें पोक करना है, समथिंग लाइक दैट. सो एक्सरे इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोनी पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली. ओके, बोन्स look
bones appear white and air appears black. Sorry. Water is grayish. Rest everything is in shades of gray, different shades of gray. Okay. But हाँ, we detect जैसे water fluid, air fluid level होता है. For example, किसी को stomach infection हो गया, or maybe lung का infection है, and there is fluid there. Okay, तो क्या होता है ना, fluid always settles down and it forms a level. Fluid का हमेशा एक level होता है, right? Because of the gravity it settles down. तो क्या होगा ना, वो air और fluid का जो demarcation होगा, that is very clear. Air will look like air will appear black only, but you can, because of that line, because of that typical demarcation, you can make out that this is air fluid level only. Fluid हमेशा ग्रे के शेड्स में ही रहेंगे, but because of that settlement, वो एक लाइन, पानी भी अगर ग्लास में रखो तो क्या एक लेवल पे रहता है ना. Same way in the body also, if there is any extra fluid, that settles down and forms a level. So this is why we can see the air fluid level. From this, we understand that there is something, some problem with the that organ, and this is detected from X-ray, plain X-ray. In normal case, air I'll come back to this later on. पहले मैं finish कर देती हूँ, ठीक है? Then CT scan is a little sophisticated imaging technique, better than X-ray. Why it is better? Because CT में क्या होता है ना, it uses computer. CT का सबसे पहले जो उसका मतलब होता है computed tomography scan. Okay, computer का मतलब क्या है? There is computer involved in it. Okay, जो हम इसमें भी X-ray ही pass करते हैं, but we use computer technology as well to produce an image, and this gives you a little better image than X-ray because we can see the soft parts as well. X-ray में तो soft parts नहीं देख सकते हैं, mostly bony parts ही देख सकते हैं, but CT में we can see the soft parts. We can see the brain, we can see the heart, we can see other things as well. अगर हम कोई ये use करते हैं, what is some fluid we use, radioactive fluid, जिससे जो organ जो हमें image करना है for angiogram, what do you call that, sir? I'm forgetting the name. नहीं, what is the term called? Anyways, I'll come to it. So we give that to enhance the the part that we are trying to image. Okay, so CT scan में क्या होता है, as compared to X-ray, we can see the soft parts, but bones are still white because we are using X-ray. Bones are still white, but apart from bones, we can see the soft parts as well. Okay, इसमें इतना ही एक उसके function में addition हो जाता है. Okay, CT scan is also used for other things also. जैसे आप interventional biopsy लेना है, तो आपको रियल टाइम देखना है कि वो ऑर्गन में हमें नीडल कितनी दूर तक ले जाना है, तो वो हम सीटी स्कैन से देखते हैं, बिकॉज वो तुरंत दिखाता है कि कहाँ तक नीडल गया है, या फिर अगर कोई ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन करना है तो वहां पे सीटी स्कैन होता ही होता है. ओके, इट्स कॉल्ड अ सीएम. सो दिस इज वेयर सीटी स्कैन इज यूज्ड. समटाइम्स आपका रेडिएशन में भी यूज होता है सीटी स्कैन. जब आप रेडिएशन देते हो, व्हाट इज दैट रेडिएशन? दैट इज एक्सरे ओनली. Okay, so CT scan is used in various ways for diagnostic purposes, for treatment purposes as well, and for monitoring purposes as well. Okay, and how does it work? X-ray, again, the X-ray beams are passed through the through the body, but यहाँ पे difference क्या होता है plain X-ray और CT में? Circular होता है. Okay, the images are taken from different angles. It revolves around the body from different angles लेते हैं, But तो never एक ही organ के different images आते हैं different angles, and then the computer what it does is it superimposes everything and then a proper image is formed. Okay, MRI क्या होता है? MRI instead of using X-rays it uses magnetic waves. Okay, इसमें magnetic, I know it is little difficult now, but only 2-3 left. Okay,
सो MRI में क्या होता है, मैग्नेटिक sorry, MRI is magnetic resonance imaging. Okay, it uses a very strong magnetic field basically around the body. अभी magnetic field से क्या होता है, हमारी body बनती है 70% water से. Okay, so this magnetic field, what it does is it changes the magnetic field of the protons of all the water components. And ये जो change होता है ना, the shift in the change is picked up by the MRI, and therefore an image is formed. Okay, अभी MRI का क्या उसकी क्या ये है importance है कि MRI does not use X-rays and therefore it is very very safe in pregnant ladies, right? And it is also used for imaging very small tissues as well. इसमें जो टिश्यूज दिखते हैं MRI में और जो हम CT में सॉफ्ट टिश्यू देखते हैं, बहुत डिफरेंस होता है. MRI में बहुत क्लियर होता है, CT में इतना क्लियर नहीं होता है. I'll show you something. CT में इतना क्लियर नहीं होता है. और दूसरी बात, बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग एक्सरेज, तो बोन्स जो है MRI में दे डू नॉट लुक व्हाइट. ओके, दे लुक ग्रे ओनली. फैट्स जो है, इनफैक्ट फैट एंड वाटर लुक व्हाइट इंस्टेड ऑफ बोन्स. ओके, देन इसमें सेफ्टी क्या करते हैं? एज आई सेड, प्रेग्नेंट लेडीज में सेफ है because it is not using X-rays, it is using magnetic this thing, but still pregnant women में फिर भी avoid करते हैं. क्यों? Because after all fetus जो है, it is in growing phase, right? You never know how it affects it. Therefore, unless it is very necessary, MRI is not used in pregnant ladies as well. फिर और दूसरी बात क्या है, MRI में एक और सेफ्टी वाली चीज क्या है कि if a person has got an implant, okay, any metallic structure in his body, कभी कभी आप बोन में रॉड डालते हो, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो रॉड्स होते हैं, किसी का इम्प्लांट होता है, पेसमेकर होता है, दोस पीपल आर नॉट अलाउड इन द MRI रूम. बिकॉज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे में पूरा निकल आता है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वो पूरा निकल के तहस नहस हो जाएगा. ओके, किसी के स्टेपल्स भी होते हैं, स्टेपलर जिनकी कोई सर्जरी होती है, अंदर स्टेपल कर देते हैं, तो वो स्टेपलर्स अगर मेटालिक हो तो वो भी खुल सकता है, एंड देन ब्लीडिंग occurs. So MRI are not used in those people who have metals in their body. कोई लगा के रखते हैं यहाँ, उनको भी अलाउड नहीं है, उनको बोलते पहले निकाल के. ओके, so that is important in MRI. Ultrasound क्या है? Ultrasound is the safest. It is used for antenatal, mostly it is used for antenatal monitoring of the pregnant ladies. Antenatal मतलब pregnant ladies. Okay, when they have not given birth, till then उनको monitor करते हैं with the ultrasound. Ultrasound में हम क्या करते हैं? High frequency, high wavelength sound हम through a probe we send those sound waves, high frequency sound waves. उससे क्या होता है? It hits the organ that we want to image, and that is reflected back. The sound is reflected back and again picked up by the probe. So that is called an echo. And वो एक image बनाता है, एक video भी बना सकता है. I mean, it gives you a real-time picture of what is happening inside the body. It is like you are seeing exactly what is happening inside the body. It is not a 2D or a 3D image. It is a proper video. Okay, so you can see exactly what is happening in real time. So this is what ultrasound does. And echocardiography जो करते हैं, it is also on the same principles, right? जो heart का हम echocardio करते हैं, that is also on the same principles. Okay, and they are also used for some surgical processes, like जैसे biopsy करना है तो हम वहाँ पे ultrasound डाल करके पहले देखते हैं कि कहाँ तक डालना है needle. Okay, जैसे अगर abdomen से कुछ fluid निकालना है, we use ultrasound and then we poke the needle and then we see exactly कहाँ पे fluid है. अगर थोड़ा सा fluid है तो we see exactly. अगर suppose यहाँ से lung से fluid निकालना है तो we use ultrasound only to see where you have to poke the needle, how far you have to go, where is the water, and that's how we do biopsies and small surgical procedures. Okay. Last is positron emission tomography, that is PET scan. What is PET scan basically? यहाँ पे the principle is completely different from an MRI or a CT. यहाँ पे कोई waves नहीं डालते हैं,
what we do is we inject radioactive chemical inside the body. It spreads out and it is picked up by all those molecules which are highly active. Highly active कौन होते हैं? Mostly cancerous cells. वहां पे इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है that these radio tracers molecules they go and settle over there, and वहां का जो color जहां बहुत ज्यादा concentration होता है उस radio tracer का, they look like red, bright red. That means high metabolic activity is happening over there. Then depending upon what color it shows, उससे पता चलता है कि activity, molecular activity कितनी है. So this is what PET scan detects, is the activity of the molecules, and therefore we can detect cancers. Okay, and दूसरी बात, cancer active है कि passive है. कुछ cancers रेडियो थेरेपी से, कीमोथेरेपी से मर भी जाते हैं कुछ cells. तो वो cells क्या होते हैं ना, they are dead, and वो radio tracers को pick up नहीं करता है. So absence of radio tracer at some point means that part is dead. It's not working. There's no activity going. So उसका presence is important, उसका absence is also important. Okay, so this is what PET scan is. Now this is how this brain, sir, maybe 5 minutes more, or should I stop? हो गया मेरा वैसे. Okay, so this is how it looks like. You can see the X-ray. इसमें नहीं पता चलेगा. I'll share this now. Then you will be able to appreciate what is X-ray का image कैसा होता है, CT का image कैसा होता है. Bones अभी भी white होते हैं. MRI में bones white नहीं दिखते हैं. Then there is PET scan. How this is very colorful. यहाँ पे you can appreciate that there are different colors that it is showing. Then these are just examples I wanted you to. Can somebody say you can't appreciate कि ये क्या है, MRI है कि CT scan है. And anyways, these are just examples. अगर आप घर पे कुछ try करना चाहो to interpret these results, you can do that at home, or maybe I can do that sometimes later. Okay. Thank you for your patience. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank Ma'am, you. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Yes, see, thing is. इनका क्वेश्चन उनके लिए रिपीट करो so that they understand. Okay, so the question is basically अगर किसी का fracture होता है तो the question is how do they decide whether to go for an X-ray or for MRI? So thing is, when we are trauma can be of anything, trauma can be of any part of the body, depends on which part is affected. For example, if the skull is affected, if the trauma is in the skull, so we do not go for MRI straight away, we go for CT scan, not even X-ray, we go for CT scan, because whenever there is a trauma, there is risk of bleeding, internal bleeding. It's not always external, it is sometimes internal bleeding as well, depending on which part of the body is affected. So depending on that, which part of the body has to be imaged, we decide which imaging technique we should use. Is it X-ray? Suppose it's a simple, थोड़ा सा पैर लग गया, कहीं जगह थोड़ा सा वो चोट लग गया, and then you are having some swelling or something. Then you're not suspecting any bleeding or something. What you're suspecting mostly is a fracture. वहाँ swelling है, pain हो रहा है, then you go for simple X-ray. That will tell you whether there's a fracture or not. Hairline fracture है या big fracture है या there is displacement or not. It will tell you. Now again, head है तो we straight away go for CT. Why? Because there is risk of bleeding inside, which may not be visible outside. Okay, so to know whether it is, for example, stroke भी होता है, we straight away go for CT to know whether hemorrhage inside or not. It is very important to detect hemorrhage inside the brain, the skull. So therefore, depending on, फिर MRI कब use करते हैं? Not in emergencies. MRI का ये drawback है, you can't use MRI in emergency.
Why? Because MRI में बहुत सारी चीजें होती हैं. It takes around 45 minutes to 1 hour to, get the complete picture. The patient has to be very still on the table. If he's moving, you can't take MRI. वो straight away आपको निकाल देंगे बाहर. उसके बाद बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होता है for some people. And उसके लिए ना बहुत आवाजें आती हैं अंदर. जैसे जैसे वो एक्सेस चेंज होता है फॉर द MRI, बहुत आवाजें आती हैं. सो some people can't tolerate that noise, even though earplugs देते हैं, you can't tolerate. Therefore MRI is, and it is expensive as well. It is time taking, expensive, and वो हर जगह होता भी नहीं है. Therefore MRI cannot be used as an emergency methodology. Okay, it has to be either CT or X-ray, depending upon what are we aiming at, what we want to see, what we want to image, which part we want to image. Okay, not MRI. And for MRI आप elective करते हैं, जब आपके पास time होता है, you want to detect something and you are suspecting something, छोटी सी कोई चीज हो सकती है, या you want to detect some soft tissue, कोई part देखना है, कोई tendon देखना है, कोई ligament है, then go for MRI. They have taken the X-ray. Then after 2 days, it will. Yeah, but I'll tell you why they probably जब आपकी any trauma will also cause some vessel injury. You never know. Yes. So soft tissue injury, they also want to know how much soft tissue is also affected. So MRI was like indicated after few days, right? Not an emergency measure, right? So soft tissue को देखने के लिए भी they probably have asked for an MRI. Okay. Excuse me, since we are running late now, so because we have lost some time. So what we will do, you can post your questions in the group. I'll pass it on to doctor and she will answer it. Wait. Sonali. Yes, Sudhaji, we will take your questions later. Okay. Hello friends, I'm here to express my gratitude towards Dr. Amruta Shenam on behalf of all students and teachers. It's really nice to hear, to listen to Dr. Amruta, and a special thanks for explaining a topic like health parameter and BP measurements, which is a bit difficult to understand common people, those who are not belong to medical background. But she explained these medical terms in very easy way, in simple words, which is giving simple examples also. So it belongs to understand us very easily, and I think we can use these medical terms very easily to impress our students also. So once again, thank you very much, Dr. Amruta Shenam. It's a break now, so we will meet at around. We will meet around at 10 minutes. 10:30. 10:30. We will meet around. We'll keep a very short break. Right. Yeah. थोड़ा कस्टर्ड एप्पल ही है तो खाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में. Announce. Sorry. That is what I am announcing. I am announcing that the break will be only for 10 to 15 minutes, and the online students, I mean, they can eat while listening to the next lecture, so they have no problem. यहाँ पे जो physically आए हैं, जरा 10-15 मिनट में हम finish करते हैं, we'll come back. And one more thing I would just like to say, because I know the PPT was not very clear. So for a week, we'll keep this recording public. So तभी आपने जो करना है वो देख लीजिएगा. Online वालों को तो problem है नहीं, but anyway it is public. You can view it again. For a week it will be made public, so you can watch it. Okay.
After 1 week, it will be again made private, so no any request will be entertained after a week. Okay, chalo bye. See Thank you you, back ma'am. after 15 minutes maximum. 10 minutes में online वाले तो जल्दी आ जाएंगे. ठीक है? Bye. Bye, ma'am. Thank you.